एक ही मेथड होती है, तो इसके वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल टू फंक्शन इंटरफेस, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसी को हम और शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं, एसएम बोलते हैं। एसएम का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, बोलो बोलो। सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बता रहे हो आप। तो डेस्कटॉप ऑडियो, आपका कोई ऑडियो नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम जो चेक किया था ना, तो आपको उसके अंदर ऑडियो ही नहीं आ रहा है। तो मुझे प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसको अगर स्पीकर एंड डिफॉल्ट इसको अगर रखते हैं, तो आप बोलो अभी कुछ, लकी, लकी कुछ बोलो, मयूरी। आपका साउंड नहीं आ रहा है इसके अंदर, डेस्कटॉप ऑडियो के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर आपका जो है ना, इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा। डिफॉल्ट रखेंगे तो फिर नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आएगा, बोलो कुछ। हम्म, लीना, लकी, आपका साउंड नहीं आ रहा है इसके अंदर, मुझे साउंड कैप्चर देखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक इट आउट फॉर अ व्हाइल। बट यहाँ क्यों नहीं रहा है, आना तो चाहिए। डेस्कटॉप ऑडियो एंड माइक, वी हैव, लेट्स फिक्स, okay, microphone we have and default we have this, okay, then here कॉपी, इसको अगर देखेंगे तो मेरे को डिफॉल्ट ही दिख रहा है इसके अंदर, स्पीकर, ओके, हेलो। आपका साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व करने का, इसके अंदर आपका साउंड नहीं आ रहा है, बाकी मेरा साउंड आएगा बट आपका नहीं आएगा रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने फंक्शन इंटरफेस के बारे में बात कर रखी है। और थोड़ा मोर अबाउट बात करते हैं कुछ आगे कंसेप्ट की, जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है आगे, अगर मुझे आगे लैम्बडा एक्सप्रेशंस पढ़ना है ना, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज हम बात करेंगे एनोटेशंस के बारे में, ठीक है। लेट्स गो एंड वी विल टॉक अबाउट एनोटेशंस। आपने एनोटेशंस पहले सुना है नाम, हैव यू हर्ड अबाउट एनोटेशंस बिफोर? ओके, एनोटेशंस, ओके। अब देखो एनोटेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज दिस एनोटेशंस। एनोटेशंस एक तरीका होता है, ओके, इट इज वन ऑफ द वे, by using these we can directly tell compiler something what we wanted. Let's make it in even a simple thing, हम कोड लिखते हैं, तो कोड लिख हम वी राइट अ कोड, और कोड के जरिए हम कंपाइलर को कुछ बताते हैं कि मुझे ये चीज़ें एग्जीक्यूट करना है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आई वांट टू प्रिंट 1 to 10, 10 to 1, ओके। सो यू आर राइटिंग कोड, दैट इज वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग। अब मैं बोलता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द कोड, हम कोड तो लिख ही रही है, वी आर राइटिंग कोड, ओके, एंड विद दिस कोड वी सेंड दिस कोड टू द कंपाइलर, that we are very clear with, okay. But apart from the code, I wanted to share something else, I wanted to share some important instruction, or I wanted to share some important details, okay. I wanted to share the metadata, okay। Have you heard about metadata, guys? हाँ, आपको मेटाडेटा के बारे में पता है? देखो मेटाडेटा ऐसा होता है, मेटाडेटा का मतलब क्या होता है, ओके, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ओके, सॉरी, अबाउट द डेटा, और ये समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लो, ओके। मेटा डेटा का मतलब होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, डेटा इसका मतलब क्या है, हम लिख तो रहे हैं, देखो कोड तो हम लिख ही रहे हैं, वी आर राइटिंग कोड, बट कोड के साथ साथ हम कंपाइलर को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताना चाहते हैं। व्हाट मेटा डेटा का मतलब ही इन द सिंपल क्या होता है, यू वांटेड टू टेल द कंपाइलर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके गाइस, वी वांटेड टू शेयर और टेल द कंपाइलर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट डेटा, ये समझ में आया? सो मेटा डेटा का सिंपल वर्ड के सिंपल मीनिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, वी वांटेड टू शेयर समथिंग, ओके। हम कोड तो लिख रही है, कोड तो हम कंपाइलर को भेज रहे हैं, बट इसके साथ साथ में हम कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ में बताना चाहते हैं कंपाइलर को, ओके। सो अगर ये सपोज द कोड आई हैव रिटन हियर, एंड
इसके रिलेटेड मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कंपाइलर को बताना है. आई वांटेड टू शेयर some more extra detail about this data. So one of the way to put or to share the information about the data, अगर मुझे यहाँ पे इस कोड के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स शेयर करना है कंपाइलर को डायरेक्टली. ओके, कंपाइल करने से पहले, अभी कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है, कोड कंपाइल नहीं हुआ है, बट मैं डायरेक्टली कंपाइलर को कुछ चीजें बता सकता हूँ कोड कंपाइल करने से पहले. दैट मेक्स सेंस इज दैट गाइज I can share some details in this in the like a simple word. We are going to share extra information about data, and whenever we talk about extra information about data, it is called as a metadata. Make sense? Okay. बताओ लकी लीना, बताइए बताइए. ओके, तो कोड तो हम लिखने ही वाले हैं. इससे पहले भी कोड लिखा था, अभी भी लिखेंगे. और जब तक हमारे अंदर एनर्जी रहेगा तो कोड तो लिखते रहेंगे, तो कोड तो हम लिखेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस राइटिंग कोड, आई वांटेड टू शेयर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. क्या मुझे भेजना है साथ में? कोड तो मैं भेज ही रहा हूँ, बट मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ में बताना है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके. और जब भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर को भेज सकूँ. Okay, for that what we use annotations. Okay, so what is the use of annotations? To share the extra information about the data. Okay, what is the use of annotations? What annotations does? Okay, it actually to share help to share extra information about the data. Okay, and you will get these things when we are going to take some example about data. Okay, अबाउट द डेटा एंड इट इज एंड मोर एक्सटेंसिवली. जब अभी हम आपने देखा भी होगा, मे बी यू हैव सीन सम एनोटेशंस, बट जब हम फ्रेमवर्क्स के ऊपर जंप करते हैं, व्हेन वी जंप ओवर द फ्रेमवर्क, जैसे आगे जाके जब हम हाइबरनेट सीखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हाइबरनेट. ओके, तो यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें होगी ना, वो एनोटेशंस के साथ ही काम करेगी. मोस्टली आप देखो कि हम एनोटेशंस लिख रहे हैं, उसके साथ में हमारा काम हो जा रहा है. मीन्स वी आर नॉट राइटिंग दैट मच कोड टू share what we wanted to do. Means अगर मुझे कंपाइलर को बताना है, I wanted to do this. Okay, so for that I need to write a code, right guys? Without writing code मैं कंपाइलर को तो नहीं बता पाऊंगा ना कि what I wanted to do, right? है ना? समझ आ रही है बात? बाकी तो इसको मैं सिंपल बताता हूँ. देखो, जब भी हम मुझे कोई भी चीज़ करना है, कोई भी चीज़ परफॉर्म करना है इन लाइक प्रोग्रामिंग, तो हम उसको लिखते हैं, वी राइट एक्सटेंस, हम एक्सप्लिसिटली कोड करते हैं. बट जब हम फ्रेमवर्क्स के ऊपर जंप कर जाएंगे ना, जैसे हम हाइबरनेट सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग हो सकता है तो वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा. तो वहाँ पे मोस्टली जो काम होता है ना, वो आपका एनोटेशंस के ऊपर होगा. और एनोटेशंस हमारा बहुत ही काम इजी कर देते हैं. मीन्स हमारा जो बहुत सारा जो हेक्टिक वर्क है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सिंपल करके दे देते हैं, हमें बहुत ईजी हो जाता है आगे बनाना चीज़ें. तो जैसे हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है. ओके, उसके बाद में वी हैव अ स्प्रिंग बूट, है ना, वी हैव अ स्प्रिंग बूट. तो जब हम किसी फ्रेमवर्क्स के ऊपर जंप करते हैं ना, तो मोस्टली वहाँ पे चीज़ें एनोटेशन से हमें करके दे रहा होगा, एंड इट विल मेक सेंस व्हेन वी जंप ओवर दोज टॉपिक्स. बट फॉर नाउ, let's talk about what is this extra information we are sharing. What is this extra information? Okay, and we directly share this extra information to the compiler. Okay guys, so always be like, don't be get confused. When we say information, extra information we share, okay, this is the code I have, but I wanted to share more about more detail about this code. Okay, that this is the extra information you should keep in mind. Okay, तो compiler उसको याद रखेगा. Let's try to go and write some line of code. तो लाइन ऑफ कोड से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्लियर होगी. अगर हम थेरी में ही पढ़ते रहेंगे ना, so things will get confused or overwhelmed maybe. But for now, let's go, we will try to understand uh, what actually I wanted to say here. So let it open, and it's so easy, you don't have to memorize anything about it.
Annotations are very easy. Okay, and we need to understand annotations before going for the function interface. Okay, that is very important. Okay, let's try to go here. So this is my car. This is the thing I have here. I will just try to remove it. Okay, and it is my car. I will remove as well. Okay, so it is anonymous inner class, guys. The class I'm using here is anonymous inner class, but I will try to write a code for the annotations here. Okay, that is very simple. Well, see what I want here. I will use a very simple example where we are doing inheritance. Okay, let's see. Suppose I have a class A. Okay, and this class A can have properties, functionality, constructors, lot of things it can have, right? It can have inner classes. It can have like nested structure as well. We have seen all of this कि एक के अंदर एक classes कैसे बनाते हैं. Okay, those things we have seen. So mainly class consists data member and member function, functions and variables. Okay, this is the class I have. Let's see what this class I will have. Let's say this class I will have void display. Okay, this is the function this I have, and here I will write uh, I am A, right? Fine, this is okay. So if I will just try to create object of A, can we? Yes, let's try. I will write not class A. I will write A obj. Okay, let's try obj is equal to new A. Okay, then I will write obj dot display. Okay, fine. So with the object of A, with the reference of A, I am accessing this display method, right guys? Make sense? And there is no confusion in this, that how it's work. Okay, fine. So if we will run this, we will get I am A. Okay, let's run. Of course, you know it. How what will be the output? Okay, you are getting I am A. Okay, fine. Now, what I will do next here? I will try to can I create another class B, and can we extend this class to A? Yes, we can, right? And that makes sense. Now, can I have the same display method here in the class B? And can I write imb here, something like this? Yes guys. Okay, now we have created parental relationship. Okay, so there is no so creating object of A is not making any sense, because when we do inheritance, always we create object of child, not a object of parent. Why we create a object of child always, guys? Not. Yes, very good. Because of the, for what we want, we create object of B, because actually if you create object of A, you can only access the properties of A itself. You cannot access properties of B. Okay, fine. So always remember, you are going to create objects of child. Okay, not of parent. So because of the priority, we want more things to be accessed. So अगर मुझे एक ही ऑब्जेक्ट से सारी चीज़ें एक्सेस करते आ रही है, तो आई विल नॉट क्रिएट अ separate objects, right? That makes sense. So with the object of B, so let's say I will create a B uh, object obj. Let's say B obj of B is equal to new B. Fine. I will let obj B dot display. Okay, fine. So now in this case, what I'm doing, I'm trying to create object of B. Not trying, I have created. This is the object of B. So with the object of B, I'm calling display method. So the question is that actually I have display method in both the classes, parent class, child class. So which method will execute, guys? This one? Yeah, right? This one will execute, not this one. But why this one is will be executed, guys? Not this one? Huh, because of priority. What priority says? Whenever you are going to access anything from the child class. So okay, so this is the child class object, and okay, and we are saying obj.display. So whenever you are going to access anything with the child class reference, it will being search in the child class itself. So okay, so from objb we are writing display.
and it will search first in the child. Do we have display here? Yes, we have. So it will not go and execute this one because we are getting display in the B. If it will not have display, then it will search in the parent class. Make sense? But still, every time you try to access anything, it will being searched in the B. If you didn't have that, then it will go to the super class, the parent class. Okay, then it will search in that body. If there we also don't have that, then it will say, okay, you don't have any method which is display. Makes sense? And if I will try to run this, okay, let's try to run this, and what we'll get this time, we'll get imb. That makes sense. Okay, so this is a very simple code we have written. Now what I want, can I have like when we write a code, sometimes we have a bigger function name as well. So here we have written display, but sometimes there is a situation where you have a long function name, but we will try to use shortcuts, but we don't use long uh, names for the function. Okay, for the sake of readability, हम उसको जल्दी रीड समझ पाए, और ज़्यादा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा तो लिखने में कंफ्यूज हो सकता है। अगर हम उसको यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास भी, आई एम ट्राइंग टू ओवरराइट दिस, राइट? तो मे बी वी कैन मेक सम मिस्टेक्स इफ द नेम इज टू लॉन्ग, we can make mistake. It is possible that we might make mistake during writing. Okay, so let's suppose display, I will write display information about A. Okay, so this is the name I have, and sometimes you will have those names. Okay, okay, I'm writing display information about A, and it is writing something in for information of A. Okay, and here it will not show us information, it will just show us some characters here. Okay, or number. This is some kind of code A will have. Okay, it is the information. Now can I have the same name here, like a display informations about B? That makes sense. Okay, समझ आया? So I have the same methods here. Yes, लकी लेना, समझ आया? बताओ. Yes. ओके, देखो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने डिस्प्ले मेथड लिखा था जो कि बहुत छोटा था, फिर हमने सेम डिस्प्ले मेथड बी के अंदर भी लिखा था, और फिर इसको ओवरराइड करके हमने इम्प्लीमेंट किया था। बराबर है ना? समझ आया? नाउ देर इज अ सिचुएशन गाइज, जस्ट मेरे मेरे बातों पे गौर करना, ठीक है? देर आर सम सिचुएशंस जहाँ पे आपका जो फंक्शन नेम है ना, वो बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, फाइन, योर फंक्शन नेम विल बी longer than what like till we have written. अब यहाँ पे मेरे पास बड़ा सा फंक्शन नेम है, सो हियर आई हैव सेम मेथड इन द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ओके, बट वो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, यानी बहुत बड़ा नाम है, फंक्शन का नाम जो बहुत बड़ा है। ओके, मेक सेंस? ओके, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन अबाउट ए, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट बी। ओके, एवरीथिंग इज सेम, बट फंक्शन नेम थोड़ा बड़ा हो गया। इट इज बीइंग like longer this time, and this may be possible in your project that you have a longer function name. Okay, and I'm trying to do the same thing here. Okay, I have two same methods, and like, can I create object of B and call this method here which is present in B, and I will get information about B. So can I write this? Let's see. B obj is equal to new B, and here we'll write, okay, new B, and we'll write obj dot display information about B. That's what I want. So this display information about the B is overriding this display information about A. Okay, and of course we should get this um, we should get information. एक मिनट, मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ. Okay, and here I will call display information about A. So here what I have called this display information about A. So I have called the parent, I have called the display information about A, and here I have display information about C. So what I have written A and B. So I have display information about A and display information about B. So I will just remove this A and B
ओनली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट आई हैव, और यहाँ पे मैं ओनली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट बनाऊंगा। समझ आया? बताओ। Okay, so of course we are creating child class object and we are calling this child class method. It should work. Okay, it should, the child class method is overriding the parent class method and we should get information of b. यहाँ तक समझ में आया? Anyone guys, do you have any kind of problems here? बताओ। देखो, हम हमारा फंक्शन नेम लॉन्गर हो गया, बाकी कुछ भी नहीं। फंक्शन नेम लॉन्गर हो गए, सेम फंक्शन नेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड वाली मेथड कॉल किया। लेट्स ट्राई टू रन दिस। Okay, of course it should print the information about b, not a, because it is overriding, right? Okay, let's see. And what we can see here, we are getting information about a. Why? Why it's not overriding the parent class method? The beauty is that I have made some mistake here. You can see in the a we have display information about, and in b we have display informations about. So here I have written one s which is extra, right? Yes, can you see guys? Okay, and this might be possible that when you try to override the parent class method, because it has a longer function name, you can make mistake. Okay, and this mistake can be called as a bug. Okay, it is called as a bug. So what is bug in your program? So whenever you write something and you like don't see the expected output, you wanted to see the information about b, but you are getting here a because of some small mistake you have written. And such cases, when you have the longer functions name and when you try to override those in the child class, maybe it's possible that you like written something wrong and that cause some issue. Okay, so what I want this method to be override. What I'm trying to do here in the class b, I'm trying to override the method, right? Yes, I'm trying to override, guys. In the class b, I'm trying to override. Okay, so I can directly tell the compiler here, okay, I'm trying to override the method which is above. I'm trying to override. I will tell compiler, hey, this display information I wanted to override. So you will use annotations here. So how you will use annotation? You will just write at the rate, and here you will see override. Okay, at the rate override. Can you see this override? At the rate override. Can you see this? When you will add this override, it will give you some error. So what this error is, like it is giving us a red line. What actually the meaning of this red line? This red line is saying method does not override met, uh, method does not override method from its superclass. What it's saying? It's saying, hey, the display information you are writing here is not same as of a parent class. Make sense? Because here we have s extra and here we don't have s. So it's saying the method you are trying to override is not the same, it is different. Here you have written something else and here the original structure is different and you are writing something else here. It will directly gives you like a red line. Why? Because we are trying to override method which doesn't exist in the parent class. We have display informations about and here we have display informations. It is not same. So this overriding annotation is telling us, okay, it is not the same. Whatever you are doing, you are making some mistakes. Okay, so then we will see, okay, what mistake I'm doing here. So I can see I have added one s extra. If I will remove this overriding is gone, right? Can you see? Okay, so what this overriding annotation telling us, this display information is being overridden from the parent class. Make sense? So whenever you see override annotation, it means this method is getting this method is present here and in parent class as well. That's why you get an override, right? Make sense? So it is telling you, okay, this function is being overridden. Okay, fine. So maybe you have seen in some previous sessions whatever we have did. Let's try to create some uh, like a simple structure. I will create an interface A, and of course interface A will have a
can have a like a single marker interface, SAM, or normal interface. Let's create a show method or display method here. Okay, and it will not have any implementation because we are trying. We should have uh, like abstract method. So I have here void display. Okay, so interface cannot be instantiated. That's I know. Let's create a class B and then I will implement A. Make sense, guys? है ना? समझ आया? Now see, interface cannot implement this method. So now the class is responsible. That's why we are writing whenever you inherit like interface and class, you write implements because this class B will implement everything which is present in A because A cannot implement that. Okay, so we need to override this display method inside this class B and then it will have implements. So when you write class B implements A, you are getting red lines here. And if you hover over this, it will it will give you like implements method. Okay, if you click over this, it will say this method you wanted to implement. Okay, enter. And here you can see override means display method is being override from this interface A. So what this override is telling us? It's telling okay, this display method is being overridden. Make sense? And if I write something displays, it will give us error. Okay, it will say no, you don't have any display. So apart from this display method, we are also telling compiler, okay, I'm trying to override it. Always remember, okay, if I make some mistake, tell me where I'm making mistake. And compiler is our friend. Like whenever you write something wrong, he will tell you have written something wrong. And here it will gives us error because compiler is we are telling compiler I'm trying to override. And if I make some mistakes during overriding, it will tell you that. Okay, and if I remove this here and it will be same, then here you're not getting anything. And I will write display implementing display something. Okay, implementing display. इतना समझ में आ गया बताओ? We have a lot of annotations in the few further sessions we are going to see it. A lot of annotations we have. Okay, and I will create a class b obj is equal to new b and then I will write obj dot show display. Okay, this thing you have seen this here implementation here. And again if you create an anonymous inner class, in the in that case you will see the same thing, annotation which is overriding present there. Okay, let's see. I will create a anonymous inner class to explain you that a obj is equal to new. And if you will enter this here, you will again see the override here, right guys? So it's telling okay, this is overriding, right? And you can implement something here. समझ में आया? हम्म, बताइए बताइए, कितना समझ आया? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? और हम एनोटेशंस को आगे भी देख रहे होंगे. डोंट वरी, इट इज हाउ एनोटेशंस इज, इट्स दैट सिंपल इज. Okay, but we are writing display, but with display we are telling something else as well. Okay, this is overriding. Okay, we are trying to override here. Okay, इतना समझ में आ गया? Okay, maybe this example might not be that much like efficient to understand what I'm trying to say, but let's go to the next topic, and here you will see the power of annotations. Okay, okay, let's that will make more sense. Now let's go. Okay, so yesterday we have talked about types of interfaces, right? है ना? So we have seen we have normal interface, we have a functional interface, and then we have marker interface. Okay. Now, when we talk about functional interface, what is actually functional interface, Mayuri? Okay, it will have only one abstract method, which is called as, that's why we will call it as a SAM, right? We'll call it as a SAM. But let's try to take this example here. Suppose I have a interface A and I want it to be like functional interface. I want it to be functional interface. What does it mean?
it will have only one method which is display. ओके समझ आया? फंक्शन इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि I will have only one method inside this A, not more than one. If you have a more than one functions in any interface, that will goes in the category of normal interface. है ना लकी लीना? Yes. Okay. So when I have created this interface A, my intention is it is a function interface. Or what is actually functional interface mean? Mayuri, बोलो बोलो. हाँ मीन्स जब मैंने इस इंटरफेस को बनाया तो इसे बनाने का जो पीछे का जो मेरा इंटेंशन था कि इसको हमें सैम रखना है. सैम में यानी सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर होना चाहिए. आई वॉन्ट दिस इंटरफेस टू बी फंक्शन इंटरफेस. तो मैंने इसी इंटेंशन से बनाया था कि इसके अंदर एक ही मेथड होगी, एक से ज़्यादा मेथड तो होगी नहीं. अगर होगी तो फिर वो फंक्शन इंटरफेस नहीं रहेगा. तो मैंने बनाया था, मेरे इंटेंशन ऐसे थे इसको बनाने टाइम, इसके अंदर ओनली एक ही मेथड रहेगा. बट who who will stop you to create another method inside it? No one can. If you means my pure intention is that this A should be function interface. It should not have any method. Only one method it should have, not more than one. But who limits you? Who will stop you? If I will just try to create another method which is void run here and just create another method, I'm not getting any issue. Okay, guys, have you got my point? What I'm trying to say? बताइए. मैं तो चाह रहा था कि फंक्शन ये जो इंटरफेस ए है ये फंक्शन इंटरफेस है, इसको इसके अंदर कोई दूसरे मेथड ना है. बट कोई इसको रोकेगा नहीं क्योंकि आप इसको अंदर बना सकते हो. अभी मैंने बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया. बराबर है. ठीक है लकी लेना. ओके. सो तो मैं कंपाइलर को बताना चाहता हूँ. आई वांट टू टेल द कंपाइलर, हे कंपाइलर, दिस इंटरफेस ए इज अ फंक्शनल इंटरफेस. ओके, this interface A is a function because nowhere I have mentioned this is a function interface. It is my intention. Okay, but how other will understand my intentions without telling it? So I will tell my intentions to the compiler. Hey compiler, this A is function interface. Use resist anyone if that person is trying to create another method inside this A. Okay, don't let it happen. Fine. So how I can resist this? How I can tell compiler, okay, it is a function interface, because function interface is not having a different syntax. It is same as normal we write, but it have only one. Sorry, it has only one abstract method. Okay. So here I can use annotations. I will, with the help of annotations, I will tell, hey, compiler, this is a function interface. Okay. How I will write at the rate, and here I will write functional interface. Can you see this functional interface annotation? Yes. या सबसे पहले आपने क्या क्या करना है, इंटरफेस के ऊपर आना है और यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लिखना है. दिख रहा है आपको फंक्शनल इंटरफेस? या कैन यू सी? लकी लीना बताओ. नहीं समझ आया? ओके. ओके ठीक. ओके ठीक है समझते हैं. सी, आई हैव क्रिएटेड दिस इंटरफेस ए एंड आई वांट कि ये सिंगल एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहे. मींस आई वांट दिस इंटरफेस ए टू बी फंक्शनल इंटरफेस because we have a three type of interface, right? Simple normal interface, functional interface and marker interface, right? I want this interface A to be a functional interface. What does it mean? Lucky, Lena, बोलो बोलो इसका मतलब क्या है? Having only one abstract method. Lucky, have you got this? My intention is that this A should be a functional interface. Means it will have only one abstract method. ठीक है समझ में आया इतना? But no one will stop you if I create another method inside this void run something this. We are not, no one is stopping us, right? You can have multiple methods here. And if someone is creating multiple methods inside this interface, it is this like destroying my idea and purpose of having this A as a single interface. Make sense? Okay. So
if I wanted to tell compiler, hey compiler, this A is a functional interface. Okay, I will tell compiler, hey, this is a functional interface. Okay, so how I'm creating interface, but apart from the interface, I want to tell the compiler this is a function interface. So I have to use the annotations to tell compiler, okay, this is a function interface. How? Okay, I will write at the rate, and here I will write functional interface. Can you see this function interface option here? Yes, Lucky, दिख रहा है? Yes, Lucky, Lena. Can you see this function interface? The moment I will add this function interface annotations, enter, you will see error, right? Can you see error? Why we are getting error? It's saying, okay, what we are trying to tell the compiler, okay, this A is a functional interface. At the level of annotations, we are telling more information. Okay, this A is a functional interface, and what functional interface means? It will have only one abstract method. We have defined two, and with the help of annotations, we can directly see we are doing something wrong. And what compiler is saying, hey, this A is a function interface. You cannot create another method inside it. And if I will just remove this, error is gone. Can you see? So with the help of function interface, we can define the boundaries. Okay, you cannot do this, you cannot do that. And if I will not write any annotations here, you will, no one will stop you to create another method here, right? Void config. Make sense, Lucky? Okay, so when I will add functional interface at the rate annotations, and which is function interface, you cannot have these two methods. At the time of writing code, you will get issues. Okay, and if I will just remove this, now error is gone. Okay, so if anyone come, means maybe I leave some company and I join another company, and my project till जहाँ तक मैंने इसके ऊपर काम कर रखा है, if someone is new joined, and that person will see, okay, it is a functional interface, now I don't have to create anything inside of this, so it will follow a structure. It will not add any other abstract method inside this interface, because he will see, okay, this is a functional interface. समझ आया? ओके, इतना क्लियर है आप सबको? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? एंड वी आर गोइंग टू यूज एनोटेशंस इन द फर्दर सेशंस एज वेल. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, always we will write annotations and all those things, so you will not get confused. It is so easy. Okay, we are going to use these annotations like a lot of time in the further programs, so don't get confused. It is easy. So with the what actually we do with the help of interface, we try to provide extra informations about the data, okay, or metadata. Make sense? बताओ. Okay, so can we take like a 15 minutes extra? Is it okay? Is it fine for you, or can we shall we move to the like shall we move go to the next session for the next topics? कल देखे? आज ओवरलोड हो गया. ओके, कोई नहीं. ओके, इतना हमें याद रखना है. एनोटेशंस थोड़ा टाइम लेगा डाइजेस्ट करने में, बट इट यू विल गेट इट. Always remember, with the help of annotations, we are like sharing some more extra information about the data, about the code we are writing. So what actually information we are forwarding here? We are forwarding, okay, this is a function interface. We are creating interface A, but also we are specifying, we are telling compiler, hey, it is a functional interface. So when compiler will know, okay, it is a function interface, he will not, I cannot say compiler is a he or she. Okay, compiler will not let any other method to be declared inside of this, because we have shared the information, extra information. Okay, this is a function interface. No one can create any extra information like void config here. Make sense? You can see here. समझ आया? यस लकी. ओके, ये चीज़ें धीरे धीरे और हम आगे भी, क्योंकि अभी हम कल लैम्बडाज को देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी लैम्बडा एक्सप्रेशंस. तो वहाँ पे फंक्शन इंटरफेस, यू विल सी द फंक्शन इंटरफेस. ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट. बट इतना हमें ध्यान रखना है कि हम इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को भेजते हैं, बताते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है, ये ध्यान में रखना है.